Subham, call all the villagers and make them clean this area. This area is so dirty. Go fast. Okay, so you people have to clean this area. Okay, and within 2 hours. Did you understand? Understand. Okay, so now start cleaning this area. अगर तुमसे कह रहे थे पढ़ लो, मगर तुम पढ़ नहीं रहे थे, अब करो काम। प्रधान के लड़के सारे इंग्लिश बोलते हैं और तुम लोग समझ नहीं पाते हो। कह रहे थे पढ़ लो, इंग्लिश सीख लो, अब करो सफाई। सागर, क्यों नहीं इंग्लिश सीख रहे तुम? अरे यार शुभम, गांव में इंग्लिश कौन सिखा पाएगा? मुझे पता है कि गांव में एक लड़का इंग्लिश सिखाता है। अरे यार कृष्णा, मेरे पास पैसे ही नहीं इंग्लिश सीखने के लिए। अच्छा सागर, आज हम लोग पूरा काम कर लें और प्रधान जी से पैसे मांगेंगे और इंग्लिश सीखेंगे। हाँ ये तो बात सही है। ऐसे काम करते रहेंगे। हाँ सच कह रहे हो कृष्णा। कह रहे थे पढ़ लो तुम लोग, मगर तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो। कह रहे थे कृष्णा, प्रधान कह रहे थे पढ़ लो, प्रधान ही गाँव में इंग्लिश सिर्फ बोल पाते हैं। गांव वाले इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं क्योंकि इसलिए वो सीखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं है। चलो आओ, काम पूरा हो गया, हम लोग प्रधान जी से पैसे मांगते हैं। प्रधान जी, हम लोगों ने सारा आपका काम कर दिया, आज हम लोगों को अपनी पगार चाहिए। Okay, so you people have done that work. So it's great. Why do you need money today? हाँ जी, हम लोगों को हमारे पैसे दे दीजिए और कल हम लोग काम नहीं करने आएंगे कल से। Why will you not come tomorrow to do work? प्रधान जी, हम लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं आपकी तरह बिल्कुल। You people can't learn English. Have you gone mad? Oh my God! You all are lazy. If you learn English, so who will do my work? You know, learning English is too much tough. You can't learn English. You people think that okay, my Pradhan is speaking English, my headman of this village is speaking English, so we can also speak. You people can never ever, you people cannot learn English. I am telling you. So forget about learning English and do this work. Okay? प्रधान, मुझे इंग्लिश सीखना है आपकी तरह, बहुत अच्छे से मैं इंग्लिश सीख कर आऊँगा। मेरे पैसे दे दीजिए। You idiot! You can't learn English. It's very difficult. You know, my father sent me abroad, and I lived there for 6 years. Then I learned English. It's really very tough. And who will give you money to learn English? And who will teach you? This is a village. No one can teach you English. And if it's really very difficult to learn English, so forget about this thing. Just focus on your work. Okay? Don't be fool. नहीं प्रधान, मुझे हम लोगों को सारे पैसे दे दीजिए, हमें बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश सीखना है। If you all have decided to learn English, so let me tell you something. If you learn English, if you speak English like me after 1 month or after 3 months or 6 months, of course I am going to give you my all the fields, this home I will give you, and accept this challenge. And if you can't learn English, so you have to do work a whole life for me. हाँ प्रधान जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं 6 महीना बाद आऊँगा और आपका ये खेत और घर हमारे नाम करना होगा। मैं आपसे अच्छी भी इंग्लिश बोलकर दिखाऊंगा आपको। Oh, that's great. I want to see how you are going to learn English in this village because there is no one who can teach you English. Yes, but keep in your mind, if you can't learn, so you have to do this kind of work every day for me throughout your life. Okay, understand? Now go. I'm going to give you your money and come after 6 months. I accept your challenge. Now go and show me how to learn. Show me speaking English. Bye. ठीक है प्रधान जी, आज हम लोग जा रहे हैं और 6 महीने के बाद आएंगे। शुभम, तुमने शर्त को मंजूर कर लिया। ठीक है, घर में जिंदगी भर काम करना पड़ेगा फ्री में। कौन सिखाएगा? हम बताएंगे ना, एक सर है ना, वो 6 महीने नहीं 3 महीने में सिखाते हैं इंग्लिश। चलो चलते हैं इनके पास। Hello. Okay. Did you get job? Okay. Congratulations.
Yeah. I just taught you English, and you now you got job. I'm so glad to hear this. Okay, no problem. Thank you so much. Yes, no problem. I will teach everyone. Whoever comes to me to learn English, I will definitely teach him, no matter. Okay, thank you. शुभम, ये यही का आंसर है। शुभम, यही है का आंसर। हाँ चलो बात करवाऊँ मैं। चलो। गुड Good मॉर्निंग morning, सर। Yes, very good morning. So what happened? I haven't seen all of you here before. सर हम लोग गांव से आए हैं और हमें भी इंग्लिश सीखनी है सर। Oh, that's great. If you want to learn English, you have come to me, like you have come to right place. Definitely you can learn English. सर हम लोग गांव से आए हैं और एक प्रधान जी के घर पे काम करते थे। वो कह रहे थे प्रधान जी कह रहे थे अगर तुम लोग 6 महीने में इंग्लिश सीख के आओगे तो मैं अपना घर और ज़मीन तुम्हारे नाम कर दूंगा, और अगर नहीं सीख कर आ पाओगे तो हमारे घर पे फ्री में काम करना पड़ेगा। पूरी ज़िंदगी फ्री में काम करना पड़ेगा, कराऊंगा और आपका घर और ज़मीन लेकर जाऊंगा। Oh my God, your Pradhan challenged you that you cannot learn English in 6 months. Okay, don't worry. I will teach you English in 3 months, let alone 6 months. Just tell me what your name is. सर मेरा नाम शुभम है। मेरा नाम सागर है। सर, मेरा नाम किसना है। Okay guys, no problem. Just be ready to learn English. I am going to teach you English in 3 months. Just keep watching this video ahead. Okay, let's learn. Thank you so much sir. I am able to speak English. So do I. मी टू। Now sir tell me your fee. No guys, I will not take any kind of money from you, and you trio did hard work. That is why you trio are able to speak English. It's amazing. I'm glad to see you speaking in English. Now go to your village and show your fluency to your headman of the village and snatch his land and his home. That you were telling me that I can't learn English in 6 months. Now guys, you are able to speak English in 3 months. So just go and give him a befit reply. So I want all of you so like disseminate this English knowledge in your village as well. Teach all people so that no one can say that we can't learn English. Everyone can learn English, no matter whether you are in village area or where. So guys, go and tell this thing to your Pradhan. Who is there? Oh, Shubham, you come so early in 3 months. You haven't learned English. Okay, lots of work is pending. Go and do. Stop saying this. Now we can speak English. Oh, really? You can speak English? Yes sir, we can. He speak English. Miss. Now fulfill your promise. Oh, that's great. You people are speaking English. Amazing. How did you learn English in 3 months? I lived in America for 8 years. Then I learned English. But you guys, how did you learn English? Who taught you English in 3? Sir, Gyan sir taught me in 3 months. Oh, that's amazing. I'm so glad to know that now you all can speak English. It's just because of your hard work, your consistency. So, of course, I'm going to fulfill my promise. So from now onwards, this house is yours and all the fields are yours. So now go and live your life happily. So guys, if you have any dream, don't kill your dream. Follow your dream. Sooner or later, you will definitely grab your dream. लोगों को मेरी वीडियो पसंद हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करें।